नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात संसार में केवल श्री राम नाम का ही एक अंक है। इसके अलावा शेष सब शून्य। अंक ना रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन शून्य के पहले अंक के आने पर वह 10 गुना हो जाता है। असंख्य कार सेवकों के बलिदान और पीढ़ियों की तपस्या अब फलीभूत हो रही है। आंखें जिस क्षण को देखने के लिए व्याकुल थी, वह क्षण आज आ गया है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम सब उन लोगों को भी नमन करते हैं जिसके कारण ये शुभ दिन आया है। जानते हैं श्री राम जन्मभूमि के लीगल बैटल के बारे में। श्री राम जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई 1885 में महंत रघुबीर दास के फैजाबाद के सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने से लेकर 9 नवंबर 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री रामलला के पक्ष में निर्णय देने पर समाप्त हुई। A struggle that lasted for around 566 years is perhaps the longest legal battle where Sri Ramlala had to fight for his own Janambhumi through his devotees. Though there are so many people who played pivotal role in the legal struggle, but I am sharing the contribution of 3 people who in the judicial and administrative capacity, without caring for repercussion, did what was right. The first name that needs mention is Sri K.K. Nayyar, an ICS officer of 1945 batch, who was the district collector of Faizabad at that time. On the night of December 22 and 23, 1949, after an idol of Ramlala appeared behind the central dome of Masjid, Prime Minister Jawaharlal Nehru asked the then Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Govind Ballabh Pant, to remove the idols. K.K. Nair refused to do so, warning that this would lead to grave danger of peace. On again being asked on 25th of December, Nair recorded stating that if government still insisted that removal should take place, I would request to replace me by another officer. He was later removed for dereliction of duty. रामलला की वो मूर्ति फिर वहाँ से कभी नहीं हटी। श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में स्वतंत्र भारत की यह पहली महत्वपूर्ण घटना थी। श्री नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और जनसंघ की सदस्यता ली। चौथी लोकसभा में वह बहराइच से लोकसभा के सांसद बने। दूसरा नाम जिनका हम योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है, वह 1949 से बंद हुए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के खोलने का आदेश देने वाले फैजाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे। On January 25, 1986, Umesh Chand Pandey, an advocate, filed an application with Municipal Magistrate Faizabad that locks of Sri Ram temple at disputed site be opened and people be allowed to have darshan of Sri Ramlala. His application was rejected and he appealed against it in the district court. His appeal was allowed by the district judge of Faizabad, Justice Krishna Mohan Pandey. न्यायमूर्ति कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदेश सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि मंदिर में ताला लगाने का आदेश किसी न्यायालय ने नहीं दिया था, बल्कि 1949 में जिला प्रशासन ने दिया था. Following the decision, when the list of judges recommended to be elevated to the High Court was sent to the central government, the then Chief Minister of UP left a note with Justice Krishna Mohan Pandey's name. The note read, "Pandey is a resolved, honest, and hard-working judge. Yet by ordering the opening of Ram Janmabhoomi Lock in 1986, he created a situation of communal tension. So I do not recommend his name." Because of this note, he was not elevated as High Court judge that time and was elevated as a judge of Honorable Allahabad High Court much later on 24 January 1991. आखिर में हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वो ऑनरेबल जस्टिस श्री हरिनाथ तिलहरी, जिन्होंने 1 जनवरी 1993 को श्री रामलला के दर्शन जारी रखने का आदेश दिया. 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे के गिरने के बाद वहां पर सबका प्रवेश बंद करा दिया गया था. दर्शन भी बंद करा दिए गए थे. 20 दिसंबर 1992 में अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक पिटीशन फाइल की. श्री हरिशंकर जैन काफ़ी समय से श्री राम जन्मभूमि का केस लड़ते आ रहे थे. In his petition, he prayed that it is the birthright of every Hindu to get darshan of Sri Ram. The hearing went on for 10 consecutive days, and a historic judgment was delivered by Honorable Justice Shri H.N. Tilheri, which said that Bhagwan Ram is a constitutional entity and his darshan cannot be stopped. From that day, darshan of Sri Ramlala had been continued since today. This was a landmark judgment as it is the continuous existence of darshan at the Janmabhoomi that was also taken into account in the final judgment delivered by the Honorable Supreme Court in November 2019.
The 500 years of struggle of building Sri Ram Mandir is a civilization war between two sets of values. How Sri Ram Lala Virajman won, despite all odds, is a breathtaking story of victory of Dharma. It is also a win of Indian judicial system where 1 billion people put the matter of their faith in the hands of 5 honorable judges of Constitutional Bench of Supreme Court for the final verdict. This is Advocate Swati Sinha wishing you a very blessed day. Jai Shri Ram.